Hello everyone, Namaskar. So, whenever I go to college presentations and discussions with college students, one of the most frequent questions that they ask me is ki bhi, I'm in first year of college or I'm in like second year, third year, whatever year of college, and I want to start preparing for UPSC. So, how do I do this? So, I figured I'd make a video about this topic, and isme I will be dealing with particularly people who are just getting into college. Obviously, if you're in third year, final year, so then you can start serious preparation for college. But if you are in first year, you are in a very unique position. अब यूनिक पोजीशन यहाँ पे क्यों है? क्योंकि इफ यू आर इन अ फर्स्ट ईयर ऑफ अ 3 year और अ 4 year कोर्स, समटाइम्स अ 5 year कोर्स, इट इज नॉट कि भाई आप तैयारी नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो डेफिनेटली, बट यू हैव सो मच टाइम अहेड ऑफ यू दैट इफ यू स्टार्ट दैट सून फुल फ्लेजेड कि दिन में 8 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, ये कर रहे हो, यू विल वेरी सून गेट बोर्ड ऑफ इट, एंड अगर आपको सीरियसली ये करना है तो देन यू नो मे नॉट बी द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट. Second thing that is very, very important over here is that college is a very unique time in your life. College is not something जो मतलब बार बार आप जाते हो, मतलब एक दो बार मैक्सिमम जा रहे हो आप. Maybe some people go 3 times if you're doing MBBS or something. But that's the idea. It's a very unique experience that is very useful for you in order to develop your personality. क्योंकि वहां जाके जितने लोगों से आप मिलोगे, जितनी नई चीजें आप सीखोगे, उतना शायद अब दोबारा मतलब वेरी रेयरली इट अकर्स कि इतना सारा कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपीरियंस आपको एक साथ मिलता है. सो इट्स नॉट लाइक कि आई वांट यू टू स्पेंड अ फुल फ्लेजेड लाइक योर एंटायर डे आफ्टर classes just doing civil services, because you should spend time in colleges, in societies, doing a lot of things, interacting with a lot of people, because that itself is going to be a great experience even if you want to prepare for civil services exam. With that in mind, ये दो चीजें ध्यान में रखते हुए, let's get started with the discussion for today. Now, the first and most important thing is that you should build a reading habit early. Don't worry about कि भाई न्यूज़पेपर मुझे पढ़ना है, मुझे नोट्स बनाने हैं, नहीं करना है, क्या करना है. I want you to figure out a reading habit, whether it is newspapers or it is non-fiction books or it is articles. कुछ भी, जो भी चीज आपको पढ़नी पसंद है, पढ़ने की आदत बनाओ, because this skill is going to be useful for you throughout your career, even if you get selected as an IAS IPS officer. क्योंकि वहां जाके क्या करोगे? फाइलें पढ़ोगे. अब ऐसा तो है नहीं कि कोई फाइल पे वीडियो बना के, लेक्चर बना के आपको दे देगा समझने के लिए. यू विल हैव टू स्पेंड दैट टाइम. इट्स बेस्ट टू डेवलप दिस हैबिट अर्ली ऑन. इफ यू डोंट हैव अ रीडिंग हैबिट, दिस इज द टाइम जहां पे धीरे धीरे आप इसको बिल्डअप कर सकते हो इन योर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर. हाउ? Indian Express, The Hindu, they are great newspapers. इनमें particularly focus on the editorials and the opinion pages. जो मसाला न्यूज इसमें आती है कि भाई शहर में यहाँ चोरी हो गई, डकैती हो गई, उन सब पे ध्यान मत दो इतना. But do focus on कि भाई okay, there are people like Arvind Subramaniam who will be writing about the economic problems of India, and he is somebody who has been the chief economic advisor to the Prime Minister. You will have people like Ashok Gulati, who is a very senior researcher for Indian Council of Agricultural Research. He is writing about कि भाई इंडिया का एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स. तो व्हाट डू यू गेट? यू गेट अ वेरी ब्रॉड एजुकेशन. एंड नॉट जस्ट दैट, अब यहाँ पे बहुत बार चीज क्या होती है कि भाई शुरू शुरू में हमारे पास वोकैबुलरी भी नहीं है. आई डोंट इवन नो हाफ द वर्ड्स दैट दे आर यूजिंग. सो इट्स ग्रेट. Reading these newspapers regularly will help you build that vocabulary also. It will get you a sense of कि भाई अच्छा, how are these people who are experts in these fields thinking about these topics. If you don't like reading newspapers, it's too dry for you, figure out some nice books. I'm sure you can figure out some good books. If you want some recommendations from me, or if you have recommendations that you think that others should read in terms of non-fiction books, you can read biographies also. Please do let me know in the comments. Like for example, मेरी एक personal favorite biography that I used to read quite a lot used to be the biography of Theodore Roosevelt. Right, he was an American president, and इनकी एक biography थी which I read, and it was just like a great experience. It's going like a story, and एक बहुत ही inspirational figure आपको मिलता है वहां पे. Right, so the biography of Theodore Roosevelt was The Rise of Theodore Roosevelt, because he is a very popular figure. He's one of the like 4 presidents of the US that have their face on that mountain, along with like great figures like George Washington, Jefferson, and your Abraham Lincoln. And this is the 4th guy. So like naturally not as great as those figures, but still, if he is there, something important, something very unique. Therefore, I like that biography. So you take inspiration from wherever you can, however you can. Biographies are a great way, non-fiction books are a great way, but reading is something that you should develop early on. Now, the second thing that I want you to get started with is start reading NCRTs. Now, NCRTs,
For some of you, you will have read them just now. Start reading class 11th and 12th की NCERTs at the very least. If you have had, humanities subjects, but if you are coming from a science background कि भाई 9th 10th के बाद आपने NCERTs को हाथ नहीं लगाया है, you can go back even further. You can start from maybe 9th or even 6th. The idea is simple. The longer you have been away from a subject, the earlier you start. अगर मेरे को बहुत टाइम हो गया है कि भाई मैंने NCERT कोई पढ़ी ही नहीं है, 3 4 5 साल हो गए हैं, probably start from 6th. Why? Because it will be easier for you to get back into the subject. शुरू में थोड़ा आसान चीजें करते हो तो मतलब खुद को मोमेंटम बनाने में अच्छा लगता है. The other thing that you need to understand is कि भाई शुरू में whenever you're reading these NCERTs, don't make notes, don't worry about कि भाई मतलब इसको हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है. This is going to be the foundation. इसके ऊपर बहुत सारी चीजें आप करोगे, and that's also how you think about the exam, that the exam is layering of information and layering of knowledge on top of like the things that you've already learned, and that layering will start from here. So class 11th and 12th के NCERTs, if you're from humanities background, you're doing a course in humanities, if you're doing engineering, sciences, anything else जहां पे बहुत टाइम से आपने NCERTs की शक्ल ना देखी है और ना इनको पढ़ा है, you start earlier. That is a simple metric that I will give you. Now, NCERTs के बाद write regularly, particularly now that we are in the age of AI. I'm sure a lot of you are using AI, ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, whatever you may be using. A lot of us have lost the ability to express ourselves. हम क्या करते हैं, छोटा सा कुछ एक सवाल डाल के उस पर छोड़ देते हैं कि भाई आप बाकी तू बता दे. Now, while this is great, it gets the assignment done. It is not great for developing our ability to think. For this, you need to write, and you need to write regularly, be it on any topic, not just UPSC answers, because ये भी feel रहती है लोगों को कि नहीं, I should start answer writing from day one. No, you should start writing from day one. This can be in the form of diaries, journal entries, journaling कर लो आप, या मतलब just whatever, let's say you are reading the newspaper or particular book, तो भाई उसके notes अपने बना लो कि भाई I read this particular book, what did I like about this book, what did I not like about this book, what are these things. यही चीजें हमें कॉलेज में कई बार असाइनमेंट्स में दी जाती हैं जहां पे फिर हम एआई का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. तो मे बी इंस्टेड ऑफ यूजिंग एआई, ट्राई एंड फिगर आउट कि भाई हाउ डू आई डू दिस. बीइंग सिंसियर इन अ लॉट ऑफ द वर्क दैट यू आर बीइंग गिवन will be really, really helpful along the way. And usme, writing is going to be a core component of it, because writing is how you learn to think. Thinking is not something that happens separately. Writing is a very core and integrated part of how you think, because while you are writing, बहुत बार हमें क्लियर होता है कि यार ये चीज शायद मुझे इतनी समझ नहीं आई थी. जब मैं बोल रहा होता हूं, या मतलब देयर इज द आइडिया ऑफ इल्यूजन ऑफ नॉलेज. द इल्यूजन ऑफ नॉलेज इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट दैट when we have just read something, or when we are just introduced to something, we feel we know it, right? Because it is familiar to us. इसके बारे में कई बार हमने सुना है. But if I UPI के बारे में सबने सुना है, but if I specifically ask you कि भाई कैसे काम करता है, हो क्या रहा है UPI में, do you know? Then you'll realize कि भाई there is a lot of technical depth and detail into UPI. कि भाई instant settlement जो आपके बैंक अकाउंट में हो रही है, उसके पीछे का प्रोसेस जो है, it's a big complex process. But none of us know, and everybody thinks कि भाई I know what UPI is. मैंने यहां से बटन दबाया, तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, इतना ही तो था, और क्या समझना था इसमें. This is where you need to learn to think analytically. Now UPI is just an example. You can think of 100 different things. कि भाई अब जैसे SIR हो रहा है, the Election Commission is conducting revision of the electoral rolls. सुनने में हमने बहुत सुना है कि भाई SIR हो रहा है, हू हल्ला चल रहा है, कोई यहां बोल रहा है, कोई वहां बोल रहा है. बट एग्जैक्टली SIR क्या होता है, कितनी बार करवाते हैं ये, क्यों करवाते हैं ये चीजें, क्या इसके बारे में कभी सोचा है? नहीं सोचा. तो दिस इज व्हाट यू वांट टू राइट मोर अबाउट, एंड दिस इज व्हाट यू वांट टू think analytically about. Don't just memorize, don't just be like familiar with the topic कि नहीं अच्छा I know what SIR is. इसके बारे में जितना सोचोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. एंड नॉट जस्ट दिस, इट विल ऑल्सो इंप्रूव योर स्टैंडिंग इन योर कॉलेज. वाई? बिकॉज जो कॉलेज में ऐसे डिबेटर वगैरह लोग रहते हैं, उनका ज्ञान बांटने में थोड़ा आसानी रहती है. बट दैट्स द आइडिया कि ज्ञान तभी बांटोगे जब आप कॉन्फिडेंट हो उस ज्ञान पे. और कॉन्फिडेंट कब होगे? जब आपने उसके बारे में सोचा है, जब आपने उसके बारे में लिखा है, राइट?
And critical thinking also requires you to be critical about your thinking. A lot of the ways that you think about things may not be the best way to think about them, and that is absolutely fine. नई चीजें जब सीख रहे हो तो ऐसा भी ध्यान रखना कि भाई कुछ जो मॉडल्स, जो तरीका था मेरा सोचने का, जो मैं स्कूल से लेके आया हूं या बचपन से लेके आया हूं या आई हूं, दैट माइट बी समथिंग दैट नीड्स अपडेशन. So then critical thinking with writing, with journaling, with reflecting with AI. Use AI also. I'm not saying कि भी AI को discard कर दो. But AI को use it as a tool. Don't be like कि भी AI को सारा काम सौंप के और मैंने दिमाग चलाना बंद कर दिया है. Right? Do this. Start working on these skills and take your college life seriously. This is connecting back to that same idea of that sooner or later you have to realize that the world is changing. The world is changing so much and so rapidly with AI, with new technologies coming up कि भाई पिछले 5 साल में मतलब इतनी चीजें बदल गई हैं in terms of design, इतने jobs outdate हो गए हैं just because some new technological change has happened. In such a case, if I am sincere, if I do my job, if I am hardworking, and if I have skills, maybe you have design skills, maybe you have writing skills, maybe you have a skill to negotiate, maybe you have a skill to convince people, influence people, whatever be your skill, build skills. सिर्फ डिग्री से आज की डेट में कुछ नहीं होगा. आगे चल के जितनी ज्यादा आपके पास स्किल्स होंगी उतना ज्यादा आपके लिए आसान होगा कि भाई इवन इफ नॉट सिविल सर्विसेज यू वांट टू गो फॉर एन एम्प्लॉयमेंट एनीवेयर, if you have a skill you will get a job. Just a degree is not getting anyone a job, right? And this is true for like आप IIT से हो, आपने कुछ भी कहीं भी किया है, अगर आपको काम नहीं आता तो ठीक है, सीखो, स्किल बनाओ. जब स्किल आ जाएगी तो देयर विल बी, मतलब इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू रिमेन जॉबलेस बिकॉज पीपल आर विलिंग टू पे फॉर स्किल्स, बट मोस्ट पीपल आर नॉट विलिंग टू बिल्ड स्किल्स. तो टेक योर कॉलेज लाइफ सीरियसली. जो आपकी सोसाइटीज हैं, आइदर द फिल्म सोसाइटी, फोटोग्राफी सोसाइटी, पोएट्री सोसाइटी, राइटिंग, मतलब जो भी चीजें चलती हैं कहीं पे भी, टेक पार्ट इन दैट सिंसियरली, build some skills because these skills are going to be helpful for you down the line. Which brings us to hard work. कि भाई स्किल बिल्डिंग और ये सब सारी चीजें हैं, but you also need to really work hard. Now this is an image from Kanish Kataria. I've been showing it everywhere because this is a great image. Kanish Kataria was somebody who got AIR 1 in 2019. And he got AIR 1 in his first attempt. But again, he was somebody who was already pretty privileged. मतलब वो IIT बॉम्बे के ग्रेजुएट थे एंड लाइक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट थे, वहां पे वर्किंग इन अ टॉप MNC. Despite that, he quit his job, started preparing for civil services, and उसके बाद इस बंदे ने, आप देखोगे यहाँ पे, there are about 60 to 70 refills. And this is in 2.5 months of struggle, meaning this was how much he wrote between prelims and mains. This is a guy who has every conceivable advantage, and usne almost every day he is writing one full paper, one full refill he is using up almost every day, which is equivalent to writing one full paper. अब ये बंदा अगर इतनी मेहनत कर रहा है तो then you will also have to work hard. But this is something that you want to reserve for third year, fourth year आके, क्योंकि तब आपका बेस बन चुका होगा, कॉलेज में आप सेटल हो चुके होंगे, कॉलेज की चीजें आपको समझ आ गई होंगी, थोड़ी कुछ स्किल्स आपने बना ली हैं, थोड़ी कुछ अपने आप के बारे में जो अपग्रेड आपको करना था, यू विल हैव डन ऑल ऑफ दैट. नाउ विल बी द टाइम टू वर्क हार्ड लास्ट कपल ऑफ इयर्स में, सो दैट यू आर गोइंग इनटू सिविल सर्विसेज का जर्नी ऑन अ रनिंग ग्राउंड. नॉट कि भाई अब तो चलना चालू करेंगे. चलना अभी से शुरू करो. Right as you're getting into college, build some basic skills, reading skills, writing skills, लोगों से बात करने की, लोगों को समझने की स्किल बनाओ, because all of these are going to be important. But then, after all that, you will have to work hard. And this is something that you have to ingrain कि भाई आज की डेट में भी and हमेशा से भी working hard is non-negotiable. Work hard before you are forced to work hard कि भाई मतलब now I have to catch up. Now the final skill that I want you to think about is learning to go slow. Because slow is smooth and smooth is fast. With you starting your UPSC journey in first year, second year, or so on, you have at least 3 to 4 years
एंड जब 3 से 4 साल में आप काम कर रहे हो ना, तो देन ये जो स्लो गोइंग है, इसकी वजह से जो बोर्डम होगी, यू विल ऑल्सो हैव टू डील विद इट, बिकॉज एट टाइम्स हम बहुत सारी चीजें साथ में कर रहे हैं, भाई कॉलेज का भी काम चल रहा है, क्योंकि डिग्री में फेल हो गए तो वैसे यूपीएससी नहीं कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम थोड़ा थोड़ा कुछ एनसीईआरटीज भी कर रहे हैं, थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो द प्रोग्रेस विल सीम वेरी स्लो एट फर्स्ट. You have to get used to that slow progress. This is where the marshmallow test comes in. Marshmallow test में क्या हुआ था? There was a psychologist. उन्होंने क्या किया कि a group of kids they were given an option कि भाई या तो एक marshmallow है, ये आप marshmallow is like a candy, you can eat this candy right now, या फिर 5 मिनट रुक के अगर आप इसको खाते हो तो आपको 2 marshmallow मिलेंगे. एंड दिस वॉज अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी. लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का क्या मतलब है कि भाई इन्हीं बच्चों को फिर 20 साल बाद, 10 साल बाद, 30 साल बाद और स्टडी किया गया, एंड दे फाउंड दैट द kids who were able to delay gratification, meaning the kids who waited 5 minutes to also get the second marshmallow, did much better in life. Why? Because delayed gratification is important. आज की चीज अभी चाहिए, इंस्टेंटली चाहिए, तो फिर you will never be able to do the hard things. And with civil services preparation, you have to do the hard things. You will have to sometimes give up on your social life when you're in third year, fourth year. अगर आप first attempt में निकालना चाह रहे हो, तो वो मेहनत लगेगी वहां पे. I had a batchmate of mine, IIT Delhi graduate, who secured, I think, some 300, 400 rank in his first attempt and like a double-digit rank in his second attempt. Now, this is a guy I did not see for the entirety of the fourth year. फोर्थ ईयर में जब जनता पार्टियां कर रही होती है, आई वॉज वन ऑफ देम, ही वॉज नो वेयर टू बी सीन बिकॉज ही वॉज स्टडिंग. दैट इज वॉट इट इज. Sometimes you have to give up on one thing to get the other thing that you wanted. That is the marshmallow test, and you have to take that test with your own choices, with your own life on a daily basis. Which brings us to the final point, that if you build these skills, you will not be starting from zero. अगर ये बेसिक चीजों पे आप काम करना अभी से चालू करते हो, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, लर्निंग टू थिंक क्रिटिकली, एनालिटिकली, if you work on these skills, whenever you start seriously getting into preparation, you will not start from zero. You will already be a step up from most of the crowd. Now, if you have followed all of these things that I told you so far, कि भाई आपने writing skill build कर ली, अपनी reading skill build कर ली थोड़ी, thinking critically you have learned, you are improving on those along the way as you go in your college, so you will not be starting your UPSC journey from zero. Whenever you seriously want to get into it, you will already have a step up. And if you want to further assist, further step up from that, you can check out our UPSC Essential course, जहाँ पे me, somebody who has cleared civil services exam twice in the past, Shashank sir, Ketan sir, both past rankers, multiple people who have given multiple mains and interviews, will be helping and assisting you in your UPSC journey also. तो ये जो सारी चीजों के बारे में हमने बात करी है, these are skills we also help you build in the UPSC Essential course, which is a one-stop course for people giving civil services exam in 2027 or 2028. तो UPSC Essential में past rankers ही नहीं, obviously you will also be getting 3 years of access. 3 years of access to live classes, 3 years of access to recordings of those live classes, 3 years of access to mentorship, 3 years, मतलब 3 साल का एक्सेस हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि देखो 2028 में भी आपको देना है, या उसके बाद भी अगर आपको कभी देना है, तो even if you join the course right now, you will have access to mentorship even when you are giving it way further down the line. So that's the idea with the UPSC Essential course. To know more about it, visit courses.upscprep.com. All the best on your UPSC journey.